Okay. Hello everyone, welcome to the IFAS. So I hope you are good. Now we are discussing yesterday's examples. Okay, जो कल एग्जाम्पल लिए गए थे हमारे, तो क्या आपने वो सॉल्व किए हैं? हैव यू डन इट? बताइए चलो मुझे जल्दी से. हैव यू डन इट? टेल मी फास्ट. अगर कंप्लीट हो गया होगा तो हम बढ़ते हैं, नहीं तो वही एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. चलो जल्दी से बताइए मुझे, कमेंट इन कमेंट बॉक्स. Do it fast. We don't have too much time. Okay, now we will set. चलो बताइए क्या आंसर होगा आपका. कल के जो एग्जाम्पल्स आपने सॉल्व किए थे उनके आंसर बताइए एक बार, चलो जल्दी से. तो वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर. तो कल के एग्जाम्पल क्या थे, जस्ट आई विल राइट हियर. वी विल गेट द आइडिया रिलेटेड टू द आवर एग्जाम्पल्स. Our setup is a proper. Maximum Z is equals to maximum Z is equals to 20x1 plus 10x2 plus x3 subject to the constraint is 3x1 minus 3x2 plus 5x3 less than or equals to, क्या बताया गया था कल, 50 minus x1 minus x3 greater than or equals to 10. The third constraint x1 minus x2 4x3 is greater than or equal. ठीक है, अब इस एग्जांपल को किस तरह से सॉल्व करोगे आप बताइए मुझे. टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपके जो वेरिएबल्स दिए हैं उसका ही यूज करना है आपको. तो बताइए किस तरीके से सॉल्व करोगे आप इस प्रॉब्लम को. तो यहाँ पे आपको दिया है मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 20x1 प्लस 10x2 प्लस x3. दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. इट इज अ मैक्सिमम टाइप, सो वी डोंट नीड टू कन्वर्ट इनटू द कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी मैक्सिमम है. मिनिमम होता तो हम उसे मैक्सिमम में कन्वर्ट कर लेते. ठीक है, तो एक बात समझ में आ गया हमें. दूसरा क्या है, सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट क्या बताया गया है यहाँ पर, 3x1 minus 3x2 plus 5x3 less than or equals to 50. ठीक है, 3x1 minus 3x2 less than or equals to 5x3 less than or equals to 50. Second constraint is given to you, minus x1 minus x3 less than or equals to 10. And third one is x1 minus x3 plus 4x3
लेस देन और इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे सेकेंड कंस्ट्रेंट में हमें दिख रहा है सोल्यूशन जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, तो वी हैव टू ऑलवेज कन्वर्ट द सोल्यूशन वैल्यू, मतलब राइट हैंड साइड जो है आपकी इनइक्वालिटीज की, ठीक है, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, आपकी पॉजिटिव ही होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें इसे क्या कन्वर्ट करना है, मैक्सिमम सॉरी 10 में कन्वर्ट कर देना है। सो वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग दिस कंस्टेंट बाय द -1, so we will get here the value is yours. Okay, we have to multiply this constant by -1, so new maximum function will be written as maximum z is equals to 20x1 plus 10x2 plus x3 subject to constraint 3x1 minus 3x2 plus 5x3 less than or equals to 50, okay, minus x1 minus x3। तो अब यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, ठीक है। x1 minus x2 plus 4 times of x3 less than or equals to 20, x1 x2 x3 greater than or equals to 0। Clear? I hope you will get this one. Now we are coming to the point is we are writing the standard form of the equation. So what will be the standard form that we are writing here? Standard form of LPP is, what is the standard form of the LPP? Now we are saying that maximum z as it is, which is 21x plus 10x2 plus x3 subject to the constraint 3x1 minus 3x2 plus 5x3 into 35, 3x1 minus 3x2 प्लस 5x3। हम यहाँ पे क्या पता है, लेस देन और इक्वल्स टू मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ s1 इज इक्वल्स टू क्या होगा 50। सेकेंड कंस्ट्रेंट लिखेंगे हम, व्हाट विल बी द सेकेंड कंस्ट्रेंट, x1 प्लस x3 लेस देन और इक्वल्स टू 10, x1 प्लस 0x2 प्लस x3 less than or equals to, मतलब just to slack variable is added to 10, and last one is x1 minus x2 plus 4x3, 1 minus 1, $20, ठीक है। हम यहाँ पे x1 x2 x3 s1 s2 s3 greater than or equal, so you can observe that number of equations n is number of equation कितने यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके 3 है, ओके, सॉरी m बताएंगे हम, n इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 6, क्लियर। Now n minus m is yours, n minus m is equals to 6 minus 3 is equals to, substituting 3 variables at 0 level, तो अगर x1
is equals to x2 is equals to x3, we substitute 0, then s1 s2 s3's value we are 50, 10 and 20. 50, 10 and 20. ठीक है, these are the values. Clear? तो इसको क्या बताएंगे, बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक. ओके, so yesterday we are discuss on that point. Okay, sorry, we have to again write this one. Okay, जल्दी से लिख देता हूँ, पूरा ब्लैंक हो गया मेरे से. Standard form of LPP is, okay, I will write again it because it was clean by mistakenly, that's why we have to do it. Three x2 plus 5x3 plus s1 50, x1 minus 0 x2 plus x3 plus s2 is equals to 10, x1 minus x2 plus 4x3 plus s3 is equals to 20, x1 x2 3 s1 s2 and s3 greater than or equals to 0. N is number of variables, number of variables is equal to 6, number of equations 3. So n minus m is equals to 6 minus 3 is equals to 3. Substituting 3 variables at 0 11, ठीक है. और उसके बाद में क्या लिखा था, x1 x2 x3 अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं हम तो हमें s1 इज इक्वल्स टू 50 मिलेगा, s2 इज इक्वल्स टू 10, s3 इज इक्वल्स टू 20, प्लस यहाँ पे 0 s1 प्लस 0 s2 प्लस 0 s3. ठीक है, ये होगा यहाँ पे. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. अब यहाँ पे सिंप्लेक्स का टेबल हम क्रिएट करते हैं. ठीक है, हमारे कितने वेरिएबल से, 6 वेरिएबल से, और एक्स्ट्रा कॉलम कितने लगते हैं, 4 लगते हैं. तो 6 × 4 10. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे CB XB CJ B x1 x2 x3 s1 s2 s3 एंड रेशो. ठीक है, और करस्पॉन्डिंग अब यहाँ पे फटाफट वैल्यू लिख लेते हैं. तो बेसिक वेरिएबल्स क्या है, वो s1 s2 s3. Basic variables are s1 s2 s3. Now seems to be the straight line. Now it's to be. Now we are writing here okay, now it seems to be good. Okay, we are writing the values of corresponding. So 20 10 1,
एंड दीज आर द 0 ऑलवेज, और इसके भी यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, कोएफिशिएंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 3 - 3 5 1, 3 5 1 एंड 0 0। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है हमारा, हमेशा चीज़ याद रखना है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रहा है मतलब आपका प्रॉब्लम गलत हो सकता है। क्लियर? और यहाँ पे कितने थे, 1 0 1, देन नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे प्लस कर लीजिए, 1 - 1 4, और सॉल्यूशन में वैल्यूज क्या आएंगे, 50 10 20, 50 10 20। ठीक है, तो ZJ माइनस CJ लिखते हैं अभी। तो ZJ कल कैसे कैलकुलेट किया गया था हमारा, तो दिस वैल्यू इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, सो इट विल बी बिकम एज 0। हमेशा ZJ का पहला रो जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है, बिकॉज यहाँ पे वैल्यूज क्या होती है, 0 से होती है। तो एज इट इज CJ माइनस ZJ वी आर राइटिंग हियर 10 1 0 0 0। क्लियर? नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। Next step is now next step is who is entering variable now, tell me that. Entering variable, so entering variable is maximum value is here, okay? And we are finding the corresponding ratios. So ratio is yours, first of all we are writing a ratio। रेशियो क्या होता है, b अपॉन XB, तो x a हो जाएगा, x1 हो जाएगा b अपॉन x1, 50 अपॉन 3 is near about 16.6, 10 upon 1 is 10, 20 upon 1 is 20, so minimum value is our 10। so living variable you can find out। तो living variable आपको भी मिल गया, यहाँ पर क्या है, again we are defining in the different notation, 20 10 20 हो गए, ये आपके लिविंग वेरिएबल्स हो गए यहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट कंस्ट्रेंट, तो यहाँ पे पिवोटल क्वांटिटी क्या होगी आपकी, यहाँ पे बताइए मुझे। पिवोटल क्वांटिटी इज योर 1, इट इज ऑलरेडी 1, सो वी हैव टू राइट एज इट इज दिस स्टेटमेंट, उसे एज इट इज ही लिख लेते हैं। ओके, तो एज इट इज लिखने के बाद में हमें क्या दिखने मिलेगा, S1 तो यहीं पे रहेगा, S2 इज रिप्लेस बाय X1 एंड S3 एज इट इज। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 10, X1 का यहाँ पे कितना है कोएफिशिएंट 20। ओके, 10 1 0 1 0 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे S1 के लिए इटरेशन फॉलो करना है, तो S1 R1 स्टार माइनस R1 स्टार मतलब क्या, ओल्ड वेरिएबल माइनस न्यू वेरिएबल करना है अभी, तो वो 0 बनाना है तो मतलब 3 टाइम्स करना पड़ेगा R2। ठीक है, तो वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर आपकी, बताइए मुझे जल्दी से, व्हाट विल बी द वैल्यू विल बिकम एज, so it is a 0, I know, you know also that when it is 0। now here the values are, you can say that S1 की यहाँ पे वैल्यू कितनी, 50 minus 30 is a 20, do it calculation quickly। के बाद में हम यहाँ बताएंगे 3 minus 3 is 0, minus 3 plus 0 is -3, 5 minus 3 is your 2,
1 minus 0 1, 0 minus 3 is minus 3 एंड 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली S3 के लिए करते हैं। तो S3 के लिए क्या इटरेशन करना है, सिंपल करना होगा, ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं। R3 स्टार माइनस R2, तो ओल्ड वेरिएबल से न्यू वेरिएबल सब्सट्रैक्ट करना है। 1 minus 1 is 0, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 20 minus 10 is 10, 1 minus 1 0, minus 1 minus 0 is minus 1, 4 minus 1 is 3, 0 minus 1 0। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे सेकेंड इटरेशन कंप्लीट। तो इसके जेड सीधे लिखेंगे अभी जेड जे माइनस जेड जे। ठीक है, तो व्हाट आर द वैल्यूज आर हियर, कैन यू टेल मी दैट वैल्यूज। जेड जे क्या आएगा 20, यहाँ पे 0 के तो उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। 20 0 20 0 20 0। ठीक है, और सी जे माइनस जेड जे क्या आएगा 20 माइनस 20 0, 10 माइनस 0 10, 1 minus 20 is minus 19, okay, minus 19, and one more is that here क्या आएगा, तो वह 0 0 minus 20 and 0। okay, now let we are finding the Cj minus Zj greater value। ओके, ग्रेटर देन 0 से बड़ी वैल्यू, हम सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी 10 है, तो वी आर हाईलाइट दिस वन। ओके, दिस वैल्यू इज सिलेक्टेड। नाउ वी आर सिलेक्टिंग दिस वैल्यू इफ, then what will be the our ratios। ठीक है, तो रेशियो के लिए एक कमेंट लिखा था हमने, क्या लिखा था कि अगर माइनस या 0 हो तो रेशियो एग्जिस्ट नहीं होता, होता है एग्जिस्ट नहीं होता। इफ नेगेटिव एंड 0 is present, then ratio not exist। ठीक है, अब रेशियो एग्जिस्ट नहीं कर। क्लियर, ये कमेंट हो गया। अब रेशियो ये तो एंटरिंग मिल रहा है आपको यहाँ पे, और एग्जिस्ट मिल नहीं रहा है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा आपका यहाँ कि यहाँ पे आप इस तरीके से बता सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कौन सा कंक्लूजन आएगा फिर यहाँ पे, जो हमने पहले भी लिखा था, कंक्लूजन ऑफ द LPP, in which case of the LPP gives the another solution। देखो यहाँ पे हर एक केस को हमने डिफाइन करना है। तो यहाँ पे कंक्लूजन होगा द कंस्ट्रेंट ऑफ वेरिएबल x2 of variable x2 are negative and 0, that is minus 3 0 minus 1। since the given LPP has which type of solution, unbounded solution। the given LPP has unbounded solution। ठीक है, समझ आ रहा है। I hope you will understand how to solve the simplex method। clear now, कल और एक एग्जांपल दिया था हमने,
तो इसे बिग एम मेथड भी बताया जाएगा, यहाँ पे मैं बिग एम मेथड के लिए ही बताऊंगा आपको। तो एग्जाम्पल इज मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू maximum z is equals to 6 times of x1 plus 4 times of x2 subject to the constraint। आपको इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो अगर क्वेश्चन आता भी है आपको तो ऐसे इटरेशन दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये पहला इटरेशन और ये डायरेक्टली उसके cj माइनस जेड से बताई जाएगी और करस्पॉन्डिंग कॉलम सिलेक्ट की एंटरिंग वेरिएबल आपको बताया जाएगा। तो आपको बताना है सिर्फ वहाँ पे वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या एग्जिस्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से एमसीक्यू क्रिएट होते हैं, बहुत से क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं अदर एग्जाम्स में। तो इट मे बी पॉसिबिलिटी इन आरपीएससी एग्जाम दे विल आस्क द क्वेश्चन लाइक दैट, ओके। So in simplex method there are three types of solution exist. First is the bounded solution, it is the optimal solution, okay. Second is the unbounded solution and third one is the infeasible. When they are exist we are discussing here, okay. Now we are taking one more. When we are taught to solve the simplex method or we are not achieve the solution using the simplex method, that time what we have to do, okay? उस समय हमें अगर बेसिक सॉल्यूशन की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है आपकी, ओके, अगर यहाँ पे अगर हम बता देते हैं इसे एग्जाम्पल लेते, यहाँ पे -10 है, ये +10 होता, तो आप कैसे आंसर सॉल्व करते हैं, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वही एग्जाम्पल इसमें भी डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए बिग एम मेथड का यूज किया जाता है। बिग एम मेथड इज जनरली एडवांस मेथड देन द सिंप्लेक्स मेथड। हम उसे इस तरीके से कह सकते हैं कि सिंप्लेक्स अगर जब फेल होता है तब वहाँ पे हम बिग एम में मूव ऑन करते हैं। तो बिग एम में भी कुछ रिजल्ट ऐसे है, उसे पेनल्टी मेथड sorry, big M method is also known as the penalty method, which is the question in 2016 there is asked. The big M method is also known as penalty method, okay. And what is the penalty of the big of the penalty of in a artificial variable? आर्टिफिशियल वेरिएबल की पेनल्टी क्या होती है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था वो आज हम इस मेथड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे सॉल्व होगा, मैं जैसे बताऊंगा आपको सॉल्व करते इस समय, तो वो चीजें आपको याद रखनी है, रिकॉल करने का प्रयास करना है, और आप भी सॉल्व करोगे तब आप उसी तरह से उसी ढंग से उसे प्रोनाउंसिएशन करिए। जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे हम x2 एंटर हो रहा है, ठीक है, आपको पता है एंटर हो रहा है, पर इसको बोलते रहिए आप, ठीक है। बोलने से क्या होगा, जब भी एग्जाम में आप फेस करोगे प्रॉब्लम्स को तो आपको वो चीजें इंस्टेंट याद हो जाएगी, ठीक है। तो उसी समय आप उसको क्लिक हो सकता है आपका, नहीं तो उसके लिए सोचना पड़ेगा आप। तो सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट क्या लेंगे हम, 2x1 + 3x2 लेस देन और इक्वल्स टू 30, 3x1 + 2x2 लेस देन और इक्वल्स टू 24, x1 + x2 is greater than or equals to 3, ठीक है, and x1 x2 are both are greater than 0, ठीक है। ये एग्जांपल भी मैंने होमवर्क को दिया था, आपने सॉल्व किया है या पता नहीं मुझे, ठीक है, पर हम इसे फिर से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इस एग्जांपल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एलपीपी इज, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP इज, आपको कोई भी एग्जांपल सॉल्व करने के लिए नहीं पूछा जाएगा सिंप्लेक्स और बिग एम के लिए, पर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ जिससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो सके, और ठीक है, क्वेश्चन में हमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम फंक्शन है मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 6x1 + 4x2 subject to the constraint is ours 3x1 plus 2x1 plus 2x1 plus 3x2 plus s1 is equals to 30 less than, इसलिए
3x1 plus 2x2 less than or equals to 24, or x1 plus x2 minus s3 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, सारा प्लस यहाँ पे ऐड करेंगे, इस सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे आप आपकी x1 x2 x3 s1 s2 s3 are the greater than or equals to 0, but you can observe that n is yours कितना आ रहा है, कितने वेरिएबल्स है, 6, x1 x2 x3 s1 s2 s3, 6 वेरिएबल्स, and m is yours, m is 3 constraints, so n minus m you can observe that, okay, 6 minus 3 is equals to 3. So substituting at 0 level, so you will get s1 value is 24 30, s2 24, and s3 is equals to minus 3, but s3 is minus 3, so we cannot use the s3 as a variable। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे बोल सकते हैं द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, the initial basic feasible solution is not readily available, okay, it's not readily available, therefore we are adding artificial variable that is, ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल हम ऐड करते हैं, मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 6x1 प्लस 4x2, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें, 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3, ठीक है। So if we are adding the artificial variables in a constraint, so the first constraint is 2x1 plus 3x2, so x1 plus 3x2 plus s1 is equals to our 30, 2x1 3x1 2x2 s1 24, 3x1 2x2 plus s2 is equals to 24. Third one is x1 plus x2 minus s3, अब यहाँ पे आर्टिफिशियल ऐड किया जाएगा a इज इक्वल्स टू, कितना वैल्यू था यहाँ पर 3, वी आर राइटिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल a with the penalty minus m, मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम, क्लियर। तो ये होगा यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं हम, n इज रिवर्स, n इज इक्वल्स टू 7, और सब्स्टिट्यूट variables, substitute at 0 level, ठीक है। तो ये कितना बन गया आपका यहाँ पर, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो x1 x2 x3 and last one is s3,
is equals to 0. So you will get the values of S1 is equals to 30, S2 24 and A is equals to 3. ठीक है, अब ये पॉजिटिव मिल गए तो हम मूव ऑन कर सकते हैं सिंप्लेक्स की ओर. ठीक है, सिंपली सॉल्व द सिंप्लेक्स मेथड, वी डोंट हैव टू नीड टू डू एनीथिंग. Okay, let we are coming now. We have 7 variables, so we need the 11 columns. Okay, 1 2 3. Okay, 1 2 3 and here is last one. Okay, CB, current XB, B, CJ, X1, X2, X3, S1, S2, S3, A. ठीक है, तो ये वेरिएबल्स हमने इस तरीके से लिख लिए. अब करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट लिखेंगे हम. ठीक है, तो देखते हैं 64000 माइनस M. 6400 64000 minus. Okay, now we are writing here variables are S1, S2, A, S1, S2 and A. Okay, so the corresponding values are 0 0 और इसकी पेनल्टी कितनी है -M as we see can here. Okay, and the corresponding solution are 30 24 and 3. Okay, x1 x2 x3 कितना है 2 3 1 2 3 1 और वैल्यूज क्या हो गए हमारे 3 1 2 3 1 3 2 सॉरी 3 2 0. x3 variable we don't have. Why we are writing x3? Okay, just we are removing that one. x1 s1 okay, with the equal contribution of this. First of all we are writing the coefficient of that one. कितना था 6 4 0 0 0 minus n. Okay, and 2 3 1 next one is 3 2 1 last one is 1 1 minus 1 and 1. आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे दिखने मिलेगा and how it's look like, just see here.
और यहाँ पे आपका क्या होगा, रेशियो बी अपॉन एक्स जे कहते हैं हम उसे, ठीक है, बी बाय एक्स जे। नाउ सी जे माइनस जेड जे वी आर कैलकुलेटिंग हेयर, तो जेड जे सी जे माइनस जेड जे, so directly we are writing the zj, so don't need to calculate the again and again these values। आपको समझने के लिए मैंने वो zj वहाँ पे क्रिएट किया था, अब आप समझ चुके हो। तो अब पेज मैनेज करते हैं हम, ठीक है, इस पेज पे होना भी चाहिए। तो आपका सिंप्लेक्स, आप सिंप्लेक्स या बिग गेम जब भी सॉल्व करोगे तो एक ही पेज में इसका आंसर होना चाहिए, स्प्लिट में नहीं करना है, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन एरर बहुत हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर सी जे माइनस जेड जे करते हैं तो ये क्या आएगा, तो ये माइनस एम प्लस सिक्स, सॉरी सी जे माइनस जेड जे, सिक्स प्लस एम हो जाएगा यहाँ पर आपका, तो उसे हम एम प्लस सिक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज माइनस एम माइनस माइनस प्लस एंड फोर, एम प्लस फोर। थर्ड वन इज जीरो 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 जीरो, माइनस एम प्लस माइनस एम रहेगा यहाँ पे सिर्फ, माइनस एम प्लस माइनस माइनस प्लस एम एंड माइनस एम इज जीरो, ठीक है। तो ये होगा आपका यहाँ पे कंस्ट्रेंट। नाउ नेक्स्ट कंस्ट्रेंट वी आर राइटिंग और सेकेंड इटरेशन वी कैन से दैट दिस वन, सेकेंड इटरेशन। तो सेकेंड इटरेशन क्या होगा, तो चलिए फाइंड करते एस वन एस टू, एस वन एस टू, who is replacing variable, can you tell me that? So maximum value is your m plus 6, ठीक है, and corresponding ratio we have to find that। What are the ratios? So 30 by 2 is your 15, 24 by 3 is 8, and 3 by 1 is 3, minimum value is that, ठीक है, उसे भी हम हाईलाइट कर देंगे, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप वी आर राइटिंग s1 s2, entering variable is x1, now coefficient are 0 0 and he 6, तो इसका कितना होगा, 6 हो जाएगा। नाउ वी आर राइटिंग s1, s1 के लिए लिखते हैं हम यहाँ पर s1 के, ठीक है, x1 क्या है हमारा, यहाँ पे इसको पिवटल क्वांटिटी होनी चाहिए हमारी 1 होनी चाहिए, तो इट इज 1 ऑलरेडी, ये पिवटल क्वांटिटी आपकी 1 ही होनी चाहिए, तो अब पहले से ही है, तो हमें कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, तो एज इट इज राइटिंग द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, ठीक है, इस तरीके से हमने वहाँ पे उसकी वैल्यूज लिख ली है। नेक्स्ट वन इज दैट, आगे पीछे हो रही वैल्यूज हमारी थोड़ी, ओके। नाउ corresponding column is 1 1 1, sorry 0, ठीक है ना, इट सीम्स टू बी गुड। नेक्स्ट कॉलम इज S2 के लिए अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, R2 ओल्ड R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3 करना पड़ेगा, और 2 टाइम्स ऑफ R2 जो लिखा है यहाँ पे, R1 स्टार माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3, ठीक है। तो चलिए आप फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं, 30 माइनस
3 टाइम्स ऑफ R2 मतलब 2 इंटू 3 6 और 30 माइनस 6 इज योर 24। ओके, -2 करेंगे सब्सट्रैक्ट इसमें से तो 0 हो जाएगा, तो -2 गए तो कितना रहेगा 1 0, यहाँ पे एज इट इज वैल्यू 0, तो फिर से यहाँ पे वैल्यू माइनस माइनस +2, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा आपका, और -2 और ये ठीक है। फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड रो आपको फाइंड करना है। तो सेकेंड रो में कितना गया है -3R3, तो -3R3 मतलब -9, तो 24 में से 9 गए तो कितने रहे 15। ओके, -3 तो -1 हो जाएगा। ओके, तो व्हाट विल बी द हियर, इट इज आल्सो 0 ना, -3 और 3 0 हो जाएगा। Now it's correct. So R3 is your -3 and 2, so it will be the -1, 0, so it is also 0, 0 as it is, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, -3 प्लस 0 इज 3 माइनस, ठीक है। So you can observe that your values are correct. Now we are writing Cj minus Zj again. Okay, so what will be the value of Cj minus Zj? चलो बताइए मुझे। तो 6 इंटू 6 इंटू 1 is 6, 6 minus 6 is 0, 6 Cj minus Zj it's -2, next is 0 0 -6, ओके, -6 माइनस प्लस हो जाएंगे ये, ठीक है, और 6 माइनस m -6, clear? We are coming to the next iteration. Before that we have to find that the ratio of the, तो रेशो क्या होंगे आपके यहाँ पर, चलो तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये है आपकी। ओके, तो व्हाट इज द बिगेस्ट वैल्यू इज, so we are finding the 24/2 is 12, 15/3 is yours, how much that value, 15/3 is 5, 3/-1 के लिए यहाँ पे डैश हो जाएगा, माइनस साइन हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे और एक बार। तो किससे किसको डिवाइड करना है ये भी समझना चाहिए ना आपको। ये कॉलम को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इससे डिवाइड कर दे रहे हो, ठीक है। तो भी क्या कर रहे हो आप, डिवाइड कर रहे हो, कैसे डिवाइड किया है हमने अभी, इस वैल्यू से डिवाइड किया है, ठीक है। Okay, now we are coming to the point, which one is the minimum, your 5 is minimum value, so it is removed, आपके वैल्यूज क्या होगी यहाँ पर, इस तरह से दिखने मिलेंगे आपको। तो ये क्या होगा, S2 बाहर जाएगा और एंटर कौन होगा, S3, तो S1 S3 X1, and as it is we are writing the calculation. तो S3 का अब हम देखते हैं तो इसके वैल्यूज में चेंजेस होंगे हमारे, ठीक है। तो इसका पिवोटल क्वांटिटी कितना है भाई, 3 है, तो ये 3 है, तो इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो वी आर डूइंग फॉर सेकेंड रो R2/3, तो यू विल गेट द वैल्यू, ओके। तो 3 से डिवाइड करने में यहाँ पे कितना होगा 5,
0 -1/3 0 1/3 1 -1। ठीक है, तरीके से यहाँ पे हमें वैल्यूज मिल गई। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यूज फाइंड करने हैं हमें x1 और x2। तो x1 के लिए यहाँ पे अभी क्या किया है, 1 किया है हमने, इसके नीचे की वैल्यू के लिए क्या करना है, एडिशन करना पड़ेगा। तो जस्ट वी आर डूइंग हेयर r3 old प्लस न्यू r2, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, r1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ r2 न्यू वाला। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम फटाक से। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे ये दो वैल्यूज को, तो क्या होगा यहाँ पर 5 + 3 इज योर 8, 0 + 1 1, माइनस कर देते हैं 1/3 तो 2/3 हो जाएगा, 0 1/3 0 एंड 0। ठीक है, सिमिलरली वी आर डूइंग फॉर s1, हियर वी आर राइटिंग 6 0। s1 के लिए क्या होगा 24, तो क्या करना है -2 टाइम्स ऑफ r2, 10 माइनस कर दो, उसमें से कितना बचेगा 14। ओके, तो 0, तो r1 एज इट इज 0, तो 2/3 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1, तो 1/3 रहेगा सिर्फ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/3 होगा। नेक्स्ट इज 1 -2/3 0 0। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज आएंगे आप। नाउ वी आर सॉल्विंग दिस cj -zj, cj -zj अगर कैलकुलेट करते हो आप, वैल्यूज क्या आएंगी, सिर्फ ये 6 12 ओके, 6 - 6 इज 0। ओके, तो 12/3 is your 4, so 4 - 4 is 0 again 0। 6/3 is yours, what will be the 2, और माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा 0, and it will be the -m। So here we can observe that all values, all cj - zj are less than or equals to 0। Here we can see that, देखिए यहाँ पे सभी cj - zj क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, all cj - zj are less than or equals to 0, so that's why we are writing this is the optimality condition is satisfied is satisfied। तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपकी x1 की वैल्यू क्या है यहाँ 8, s1 s2, s1 कितना है 14 एंड s3 कितना है 5। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम z आप कैलकुलेट करोगे, मैक्स z इज इक्वल्स टू, तो 0 0 0, तो इसके अंदर s1 की वैल्यू का कोई अफेक्ट नहीं होने वाला है। तो 6x1 है ना, तो 6 टाइम्स 8 इज 48। ओके, तो 6 टाइम 48, तो इसे यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, 0 × 14 0, 0 × 5 0, and 6 × 8 is 48। So here your maximum answer is 48। I hope you will understand। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो भी किया है, आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होते हैं, उसकी कंडीशंस क्या है, क्यों यूज किया जाता है, ये सभी चीज हमने इस प्रॉब्लम में देखी। इटरेशन कैसे सॉल्व करना है, इटरेशन में बाउंडेड सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। इन केस अगर यहाँ पे आपका
x3 के अलावा मैं बोलता एक a इज द वेरिएबल इज प्रेजेंट हेयर। ओके, सपोज s1 की जगह पे a होता है और यहाँ पे उसकी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव आती अगर, ठीक है, देन व्हाट विल बी द आंसर, कैन यू टेल मी? ओके, अगर यहाँ पे अनबाउंडेड के लिए क्या होगा, इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पे कंक्लूजन आपको याद होने चाहिए, तब जाके हम इसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज होगी, अगर ये स्टेप आपको सभी आती है, सभी सॉल्व कर लेते हो, तो आपके क्वेश्चन भी बन जाएंगे। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ, कुछ नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक वी विल स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। तो ड्यूअल इसमें का एक पार्ट रहेगा है ड्यूअल ऑफ एलपीपी, so that also we will cover in next week. Okay, dual of LPP, and next point are the transportation problems, and in next 3 weeks में हम कवर कर लेंगे पूरे टॉपिक्स। ओके, जो ऑपरेशन रिसर्च के लिए, तो आई थिंक आपका 9th या 10th नंबर का पॉइंट है सिलेबस में, तो पूरे 3 वीक में कवर करने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।